Padma Shri Sadguru Brahmeshanand Acharya Swamiji, distinguished dignitaries, spiritual leaders from the US, UK, and India, Minister Sripad Bab. I wish to begin with a peace mantra from the Vedic tradition. I wish to pray for peace in our world, in India, and also our Goa. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukha bhag bhave. Peace to all of you. And I thank Swamiji Brahmeshanand for giving me this opportunity to come here and share my thoughts. I wish to read a brief text, a spiritual text which transcends religions. मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डिंग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम तो न तो झुझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। Dear dignitaries, seers, spiritual leaders, and my dear friends, we gather from diverse backgrounds, and while we may differ in beliefs and practices, we are united by a common humanity and the essential need to foster environments where love, understanding, and compassion prevail. The passage that I read
from the Bible transcends religious boundaries and highlights the very essence of what it means to coexist in harmony. In our roles as policy makers, industry leaders, and spiritual visionaries, it is crucial to remember that our initiatives, our policies, and strategies must be rooted in genuine care for one another and the world we inhabit. Love should guide our discourse, ensuring that our actions promote the welfare of all, not merely the interests of a selected few. I wish to conclude with this a few lines. Inclusiveness of all faiths and identities have been the bedrock of our country, our beautiful country, India. Peaceful coexistence is our culture and our dharma, one that sets our nation apart from many of its neighbors. Our inclusive traditions have survived many an invasion and endured to teach the world both toleration and universal acceptance. It's time we work hand in hand to uphold the ideals of love and understanding rooted in our age-old belief of Vasudhaiva Kutumbakam. We have to transcend the boundaries of individual religion and understand that each religion has its own significance and place in the spiritual journey of humanity. धन्यवाद, यह हमको यह एक अपॉर्चुनिटी दे दी है हमारे जो मन की बातें आपके सामने रखने के लिए, विशेषकर स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद और सबों को धन्यवाद। जय हिंद।